ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इन केस ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन द क्रिस्टल violet color even after they washed with alcohol and appear as purple colored when examined under the microscope after gram staining. But in case of the gram negative bacteria, these bacteria do not retain the stain color even after they are washed with alcohol and appear as pink colored when examined under microscope after gram staining. In case of the gram positive bacteria, single layered smooth cell wall is present, but in case of the gram negative bacteria, a double layered wavy cell wall is present. अगर हम thickness की बात करें तो in case of the gram positive bacteria, the thickness of the cell wall is 20 to 80 nanometer. But in case of the gram negative bacteria, the thickness of the cell wall is 8 to 10 nanometer. Next is peptidoglycan layer. It is a thick layer, also can be multi-layered in case of the gram-positive bacteria. But in case of the gram-negative bacteria, it is a thin layered after single-layered. Steatoic acid in case of gram-positive bacteria, it is present, and in case of gram-negative bacteria, it is absent. Then outer membrane. The outer membrane is absent in case of gram-positive, and in case of the gram-negative, the outer membrane is present. नेक्स्ट है पोरिन्स, जो कि ग्राम पॉजिटिव के केस में एब्सेंट हैं, और इन केस ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अकर इन द आउटर मेम्ब्रेन. नेक्स्ट इज मिजोजोम्स. मिजोजोम्स आर मोर प्रोमिनेंट इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव इट इज लेस प्रोमिनेंट. हम बात करें मॉर्फोलॉजी की तो कोकाई और स्पोर फॉर्मिंग रोड्स आर, एंड इन केस ऑफ द ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग रोड्स. फ्लैजिला. Two rings in basal body are present in case of gram positive, and in case of gram negative 4 rings in basal bodies. Lipid content in case of gram positive is very low, and in case of gram negative it is 20 to 30%. Lipopolysaccharides are absent in case of gram positive, and in case of gram negative they are present. Next toxins in case of gram positive exotoxins, and in case of the gram negative endotoxin as well as exotoxins are produced. अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं इकोलाई, इश्चेरिचिया एंड सल्मोनेला.